हाय दीपान्विता, वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या। तो दीपान्विता, योर film is coming, which is more of an anthology, which is Love in the Times of Corona. So tell us about it, because lot of the members of the audience would not know what is it. Tell us about the concept. हमें concept के बारे में थोड़ा समझाइए। जी। शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे आपके शो में बुलाया। इट्स नाइस टू मीट यू ऐश्वर्या एंड टू टॉक टू यू। एक्चुअली ये एंथोलॉजी ऑफ 3 शॉर्ट फिल्म्स है। और मेरा जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है शॉर्ट हेलो। फिर आदिल्दा और नताशा के जो है वो है टी एंड अ रोज एंड टी एंड अ रोज. And the third one is Dinner Lockdown, which has Shivani and Shekhar. So what happened was actually in Indrani Ray, I call her Indi, so I was just going to say Indi. She's a very dear friend, the director, and she is extremely talented, multi-talented in fact. She's a writer, director, so passionate about her stories and the way she wants to tell them. Then the producer Tanvi Gandhi, equally passionate. She has been associated with films like Mardani too, and Yes. many such films, and she brings in the experience to the whole thing. And we were talking for a really long time, even before actually 2020, when the lockdown happened, कि हमें कुछ करना चाहिए. We should work on something, and eventually when the lockdown happened, I think everybody's creative juices were at its peak at that time, क्योंकि आप suddenly ऐसा लग रहा था कि आप घर में बैठ गए हो तो कैसे इसके इर्द गिर्द आप कुछ कर सकते हो, and India came up with this concept in no time, and I think I was the first actor they approached, and I was like, of course, let's do this. And you won't believe it, she directed me remotely. Oh. She was in Mumbai. Okay. I was in Gurgaon in Delhi during lockdown, and she managed to sort of arrange for the DP and the assistant, and my home was, it's amazing. She dressed up, she had my home dressed up. So the home you see is actually my home, so it's very real, when you watch it. It's very current. Even the story, and the fact that I am, when you see me in the film, you will know more actually when you see it. Yes. When it releases tomorrow, how it makes, how it makes sense, because how people are waiting to communicate with each other, how you're reaching out to people, how important it is to communicate, connect, reach out. और मेरे लिए ये one of a kind मैं कभी नहीं भूलूंगी, and I keep telling Indy that thank you for this, because it's a very special role shot during unprecedented times. I'll never probably have an experience like this. उन्होंने मुझे remotely direct किया, and when you watch it, you will see how connected I think we all are, in that manner. So yeah, there are a lot of firsts in this and very special. Yes, and this is a very new concept to be to be coming up, like where the director is remotely helping in all the direction and everything. This is fantastic. And I hope to see the film very soon. Now it's becoming more interesting. Also, thank you. Tell me कि how was your journey? आपने कैसी शुरुआत की? You were a model in Miss India. You got the award for most photogenic female or model. So फिर उसके बाद एक्टिंग में कैसे आए? क्या जर्नी थी? कैसे शुरुआत की आपने? कैसे सोचा इसके बारे में? अभी अगर मैं बताऊं तो it's been quite a journey. अभी जब मुझे लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है wow, it's been so long, and it is, it's been a journey. But I think I've enjoyed every bit of the journey, so it does not feel like it's been such a long one, and it has had its struggles, which I think everyone has had. I think जब मैंने मॉडलिंग शुरू की वो मैं दिल्ली में थी उस वक्त, और उसके बाद मतलब उसी टाइम पर मिस इंडिया में ज्वाइन किया. एक्चुअली वो मेरी शुरुआत थी इन अ वे. टॉप 5 मिस फोटोजेनिक. फिर उसके बाद देयर वाज
I was signed up by a couple of brands क्योंकि उस वक्त new faces were signed, and I got a skincare contract. फिर मेरा मुंबई आना हुआ उसी उसी सिलसिले में बॉम्बे उस वक्त. तो उस I think when you're a new face you start getting auditions, film. और यहाँ actually बॉम्बे में, मुंबई में फिल्म जगत और मॉडलिंग की जगत जुड़े हुए हैं इन अ वे. क्योंकि आप जब नया फेस होते हैं, तो आपको नोटिस किया जाता है, आपको अलग अलग ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है. तो मेरा ऐसा ही था कि शुरुआत में एक्चुअली मैं फिल्म्स करना नहीं चाहती थी, मुझे एज अ मॉडल ओनली एस्टेब्लिश होना था. तो काफी टाइम तक मैंने मना भी किया. फिर मुझे एक ऐसी फिल्म मिली जो टिपिकल फिल्मों से अलग थी, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा. 16 दिसंबर. तो जब मैंने 16 दिसंबर, आई थिंक फाइनली आफ्टर ऑडिशंस, मल्टीपल ऑडिशंस, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इट. मेरी पहली फिल्म थी. बहुत ही, आई थिंक आज भी बहुत ही यादगार है. इट वाज एन अमेजिंग फिल्म, पाथ ब्रेकिंग. आज तो बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि पाथ ब्रेकिंग फिल्म आपने की. पर उस फिल्म के बाद ये भी हुआ कि अरे इसने तो उस टाइम पे ऐसा था कि इसने तो टिपिकल फिल्म नहीं की, इन्होंने नाच गाना नहीं किया. आज मुझे लगता है उसकी एप्रिसिएशन ज्यादा है, बट इट वाज, है ना, उस वक्त इट वाज सॉर्ट ऑफ अ स्लीपर हिट, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था न्यू कमर्स नॉन स्टार के साथ ये फिल्म एक सक्सेसफुल होगी, बट हुई. पर मैंने मॉडलिंग को बैक सीट नहीं दिया उस वक्त, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई स्टिल लव्ड modeling, and there were a lot of things like Bollywood had not accepted me at that time, क्योंकि मैं एकदम typical heroine के हिसाब से एंट्री नहीं की थी इंडस्ट्री में. But today I am very proud of that choice, and I think that has given me longevity in a way, it has given me longevity. And you have been doing out of the box roles, and you did not constrain yourself to one box कि मैं यही films करूँगी, यही acting करूँगी. So that's amazing. Thank you. That's a great achievement as part of an actor, I feel. So amazing. Thank you for noticing. Thank you. Okay. So tell me, आपका experience with Voot कैसा रहा? जैसे कि आपने बताया कि आपने home में शूट किया, तो कुछ और ऐसा experience जो आप share करना चाहे? How was the experience with cast? और overall कैसा रहा Voot के साथ आपका experience OTT के साथ? एक्चुअली मैं इतनी खुश हूँ कि एक वन ऑफ अ काइंड फिल्म फेस्टिवल जो आ रही है पहली बार, मुझे लगता है एक बड़े से प्लेटफॉर्म में, जो प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, वूट, जो सभी देखते हैं. मेरे ये जो हमने बनाया ड्यूरिंग लॉकडाउन की, ऐसा एक शोकेस मिल रहा है, ये आई थिंक इज so amazing, and it's commendable that a platform like Voot is supporting films and content like this, because मुझे लगता है जैसे I think Voot is a visionary platform, in that way, कि वो जो कोई और नहीं कर रहा है वो Voot कर रहे हैं. So I think it's for us it's it's a moment of pride. So happy about being part of this. और यही हम रोज ये बातें हो रही है कि हमने इतने छोटे से कुछ बनाया था, और इसका जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है, जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है शोकेस करने के लिए, वो और भी बढ़ जाता है. एंड फॉर दैट आई थिंक वी आर वेरी थैंकफुल टू Voot. इट्स सो वंडरफुल. Yes, absolutely. Yes. और मुझे ये बताइए कि ऐसे कोई इंस्पिरेशन आपके रहे हैं, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिनको आप फॉलो करती हैं, या फिर अगर इंस्पिरेशन नहीं भी हो तो चलो कोई ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस जिनके साथ आप आगे चल के काम करना चाहती हैं किसी और फिल्म में, ऐसा कुछ है? बहुत सारे हैं. ऐसा एक जन बताना आई थिंक बड़ा ही मुश्किल है. आई थिंक ऐसा है कि कभी ऐसा हुआ है कि मैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां पर मैं हूं, पर जिस एक्टर के साथ एक्चुअली वो फिल्म है उनके साथ मेरा स्क्रीन स्पेस नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं किया है. तो ये भी बहुत बार, जैसे मैंने वॉर किया, लाइक आई हैव नोन ऋतिक बिफोर, और ऋतिक की ये फिल्म थी, पर मेरा सीन नहीं था ऋतिक के साथ, so when I had met him at the premiere also, I remember telling him, I said, I mean, I get to do a film in which you are the
main lead, and I don't get to share screen space, which is just so, it is not such a great feeling. Yeah, it's heartbreaking. So, at some point, I'm sure, I would love to. There is, again, Adil Da, who is part of, we are both from Assam, Adil Hussain. Yes. So Adil Da, who's part of this, we have done 2 short films together. One was Saving Chintu, which was actually in the running for Oscars. Yes. And this anthology. But both, we don't share screen space. And I'm like such a big fan of his. And I keep saying, it would be so wonderful if we someday share screen space. So ऐसे बहुत है जैसे Nasir sir hai, I had done a film called, long ago, we were part of a film called Asambhav. And I think I had one scene with him. And recently, I shot for an entire thriller, Tushar Kapoor Productions. No, it's Tushar Kapoor Productions. It's not yet released. It's an upcoming release, yeah. So, उसमें Nasir sir hai, मैं हूँ, पर फिर हम लोग स्क्रीन स्पेस नहीं शेयर कर रहे. So there have been a lot of these little hits and misses. So I hope someday I get to share screen space with all my favorite actors. I would love to work with Vidya Balan as well someday. How lovely she is. She's wonderful. And she's such a nice person. When you meet her, she's lovely. Yes, yes. और कोई ऐसा जॉनर है जो आप न्यू कुछ ट्राई करना चाहे, कोई ऐसा कैरेक्टर है आपके मन में जो यू वांट टू ट्राई? जैसे कि फिल्म्स काफी सारी आपने की हैं, बट कोई ऐसा चीज जो आपके मन में हो कि आई वांट टू ट्राई दिस टाइम नेक्स्ट, कुछ ऐसा है? मुझे आई थिंक हर तरह का जॉनर करना है और मैं जितना हो सके ट्राई करती हूँ. जैसे मैंने एक कॉमेडी स्पेस है जो मैंने बहुत कम किया है. एक कॉफी विद डी में ट्राई किया था, एक एक आध कुछ पहले एक लाइफ में लड्डू करके टीवी शो था, उसमें किया बहुत पहले. इट वाज प्रॉब्ली माय फर्स्ट एक्टिंग स्टिंट. तो एक वो है जो मैं ट्राई करना चाहूंगी. थ्रिलर्स मेरा फेवरेट जॉनर है, उसमें जितने अलग अलग शेड्स हो सके. आई वुड लव टू प्ले, आई डोंट हैव things in my head where I'm saying I want to only play positive characters, or I want to only play do drama. So I want to play, I want to explore all sides, and I think all actors and all human beings have multiple shades to them. It is only about exploring them. So I'm just waiting to explore all of it. Amazing. Yes. So we'll be very happy to see you in different shades, different characters. Very much interested about this new one, Love in the Times of Corona. So also tell us, last question, like, what are your beauty secrets? Because many people would be wanting to know what's the reason for the glow of your skin. So if you could just share whatever you did in Corona, or how do you keep yourself so fit and so beautiful? That's very sweet. Thank you so much. You yourself are so beautiful. I think you should also share your beauty secrets. You have great skin. And I think for me, honestly, if you ask me, it's very simple, The simpler you keep it, the better. I try and live a healthy lifestyle, very honestly. I do not, no alcohol, no smoking. Sleeping long hours, love sleeping long hours, like 14 hours straight and all. So that is one thing I feel, that is what I do. Maybe that helps in some way. And of course, you're going to, do your natural beauty treatments. Like sometimes I use honey on my face, but I don't have like a regime where I'm going to do this once a week and that twice a week. No. So that natural oils I use because, that keeps face moisturized. And it's not like I don't use creams from the market. I use creams from the market as well, once in a while whenever something suits my skin. And I really feel that try and keep everything natural. Please do not go under the knife. Just do not go under the knife or start doing. That is what I'd say, to each their own, I guess. But, eventually a lot of things start looking strange. So try and be as natural as possible. Yeah. Okay. Thank you so much, Deepanita. It was lovely speaking with you. I wish to see your film very soon.
and let's see you in different characters. All Thank the you. best to you. Thanks. Hope to see you soon. Thank you. Absolutely. Thank you so much, Aishwarya.